So we had discussed many things yesterday about emerging trends, and today I am going to discuss further what is in emerging trends. So robotics we had already discussed yesterday, and this time I am going to use some different concepts of emerging trends. So this is your NASA's Mars exploration rover. This is this picture shows, and she is Sophia, which is a humanoid, and unmanned aircraft that is called drone. So now we are going to discuss big data. So what is big data? With technology or techniques making an inroad into almost every sphere of life, data is being produced at the colossal rate. Today, there are over a billion of internet users, and a majority of the world's वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स। सो जितने भी आज जितने स्मार्टफोन्स बढ़े हैं उसी हिसाब से हमारे इंटरनेट यूज़र्स भी बढ़े हैं, क्योंकि जिससे पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे तो इंटरनेट यूज़र्स भी बहुत कम थे। सो दिस पिक्चर शोज दैट द current pace around 2.5 quintillion bytes of data are created each day, and the pace is increasing with the continuous evolution of the internet of things. This results in the generation of datasets of enormous volume and complexity called big data. Such data cannot be processed and analyzed using ट्रेडिशनल डेटा मेथड। मतलब ये छोटा छोटा डेटा जो हमारे आज आज की डेट में जो हम करते आ रहे हैं उस हिसाब से ये डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज बिग डेटा का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेटाबेस डीबीएमएस वगैरह हम यूज़ करते हैं वो डीबीएमएस भी हमारे लिए यहाँ पर इनसफिशियंट होगा। सो प्रोसेसिंग टूल्स एज द डेटा इज़ नॉट ओनली वॉल्यूमिनस, मतलब डेटा कोई ऐसा नहीं है कि केवल वॉल्यूमिनस ही नहीं है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम वाला नहीं है, बट उससे भी ज़्यादा बढ़ करके हो सकता है कि स्ट्रक्चर्ड हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड हो। इट कुड बी अनस्ट्रक्चर्ड लाइक आवर पोस्ट, instant messages and chats, photographs that we share through various sites, our tweets, blog। तो इसमें सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि डेटा हमारा स्ट्रक्चर होगा। News items, opinion polls, and their components, audio, video, chats, etc. Big data not only represents voluminous data, it also involves various challenges like integration, storage, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफ़र, क्वेरीइंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटा। मतलब हमें ग्राफ भी चाहिए होगा, हमें क्वेरीज भी चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें बिग डेटा पर अप्लाई हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि बिग डेटा कुछ ऐसा वॉल्यूमिनस डेटा है जिस पे हमें हर तरीके का टास्क परफॉर्म करना होगा, चाहे वो हमें कोई एनालिसिस करनी है, चाहे वो हमें ग्राफ बनाना है, कुछ भी करना है, या हमें क्वेरी चलानी है, तब भी हमें ये डेटा यूज़ करना पड़ेगा। So big data sometimes hold rich information and knowledge which is of high business value। कई बार ऐसा होता है कि ये बिग डेटा हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी साबित हो सकता है, जो हमारे एनालिसिस के हिसाब से बनता है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा basically has five characteristics which are given here, that is volume। The most prominent characteristic of big data is it's in इनॉर्मस साइज, यानी ये जो डेटा है काफ़ी बड़ा होता है, इसका जो है लिमिट नहीं होती। मतलब अगर आप चाहें तो इसको आप कह सकते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी हो सकती है इस डेटा की। इफ़ ए पर्टिकुलर डेटा सेट इज़ ऑफ सच लार्ज साइज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस इट विद द ट्रेडिशनल डीबीएमएस। जैसा कि मैंने बोला, डीबीएमएस टूल्स के हेल्प से भी हम इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। इट कैन बी since it is the big data, so it cannot be processed using the dbms, so it can be termed as the big data. Velocity, it represents the rate of which the data under consideration is being generated and stored। big data has an exponentially higher rate of generation than traditional data set। मतलब ये है कि इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये डेटा किस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज इट इट हैज़ exponentially higher rate of generation। So
यानी आप इस चीज़ को इस तरह सोचिए कि आपका डेटा इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इसको हम कैसे प्रोसेस करें। सो वेरासिटी दैट इज सच्चाई जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ। इट असर्ट्स दैट ए डेटा सेट हैज़ वेरी डेटा, डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, सच एज स्ट्रक्चर्ड, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, और या हो सकता है सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों या वीडियोस हों, वेब पेजेस हों या कुछ भी हो सकता है। This is the variety and the veracity. Sorry, this is the veracity. Veracity means the truth. Big data can be sometimes inconsistent. This is true. Biased. It is true. Noisy of noisy, or there can be abnormality in the data or issues with the data collection methods. Veracity, any जो truthness है, refers to the trustworthiness. So this word is clear. Veracity, this is the truth of the data, because processing such incorrect data can give wrong results or mislead the interpretation. Value, the last factor is big data is not only just a big pile of data but also processes or possesses to have hidden patterns। यानी इस बिग डेटा का मतलब केवल यही नहीं है कि बहुत सारा डेटा आपके सामने रखा है, इसका अंदर कुछ हिडन भी हो सकता है, हिडन पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं एज फार एज और बिजनेस इज कंसर्न्ड। But as there is a cost of investment of resources in processing big data, we should make a preliminary inquiry to see the potential of big data in terms of value discovery, or else effort could be in the vain। यानी आपको ये इस डेटा को बड़े आसानी से, बड़ी सावधानी से इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसे करने के बाद आपको बिग डेटा के बारे में पूरी डिस्कवरी करने के बाद आपको प्रोसेस करना होगा, अदरवाइज ये सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। डेटा एनालिसिस मीन्स data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the information they contain with the aid of specialized systems and software। बगैर डेटा एनालिसिस बिना सॉफ्टवेयर के तो हो नहीं सकती। सो डेटा एनालिटिक्स के लिए टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे। बिकॉज अगर हम जैसे कि हम आपके नेक्स्ट क्लास में आपको पांडास करना पड़ेगा। सो ये पांडास इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। दे आर यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज टू enable organization to make more informed business decisions। In the field of science and technology, it can be useful for researchers to verify or disprove साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। पांडास अगेन देखिए, जैसा कि मैंने बोला, पांडास जो लाइब्रेरी हम नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेटा एनालिटिक्स एंड इट इज dealt with care and used along with the Python, because Python in Python the pandas library can be opened, and pandas जो queries हैं that can also be framed easily। व्हाट आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी डिवाइसेस आज की डेट में चल रही हैं वो सारी की सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर वर्क करती हैं। मीन्स जिस डिवाइस के अंदर इंटरनेट इनेबल्ड होगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ही काउंट की जाती हैं। द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज is the network of computers। Such a network consists of a laptop, desktop, server, or portable device like tablets, smartphones, smartwatches, which are connected together using a wire or wireless। It could be wireless also। We can communicate between these devices using the internet। यानी हमें इन devices के बीच में जो communication establish करना होता है, this is through the internet, and we can communicate between these using internet or LAN। LAN का मतलब local area network where computers are connected using the cable। So now imagine that if our bulbs, fans and refrigerators also became पार्ट ऑफ द नेटवर्क। हाँ डेफिनेटली, जब कंप्यूटर की हम बात करते हैं, कंप्यूटर तो हम जोड़ लेते हैं, केबल के थ्रू जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है केवल कंप्यूटर ही जोड़ करके हम लाइन बना सकते हैं। हम डिफरेंट डिवाइसेस जो कि नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं उनको जोड़ करके भी नेटवर्क बनाया जा सकता है, चाहे वो फ़ैन हैं या फिर वो बल्ब्स हैं या कोई और गजेट हो सकता है। हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट
Think about the advantages and tasks that can be accomplished if all these devices with स्मार्ट कनेक्टिविटी, अगर इन डिवाइसेस के अंदर कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो इनको हम बड़ी आसानी से कम्युनिकेट करता हुआ देख सकते हैं. सो दिस वे IoT वर्क्स. The Internet of Things is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate with other devices on the same network. As this is shown in the figure, this you see here, there is a laptop, there is a camera, there is a TV, and there is a desktop and smartphones and different things. Maybe यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वाईफाई जैसी चीज़ भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड नेट इंटरनेट एम्बेडेड wristwatch is also available. So at present, in a typical household, many devices have advanced hardware or microcontrollers and software. These devices are used in isolation from each other with maximum human intervention needed for operational directions and input data. IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in increasing an intelligent network of things. For example, if a microwave oven, an air conditioner, door lock, CCTV camera, or other such devices are enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on the go using your smartphone. यानी स्मार्टफोन को यूज़ करके हम अपने घर को लॉक कर सकते हैं, हम अपने घर के जितने भी डिवाइसेस हैं उसको भी स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर द डे. Rest we'll discuss tomorrow. So till then, goodbye.